Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you have all been well. I've got this new tutorial for you now, and this is quite a lengthy tutorial again, and I'm going to be explaining everything in English and in Urdu in great detail, so carry on watching. So I'm starting off with the eyebrows here, and I'm using the NYX brow gel. So this has got a colour to it, so it's got, I think it was the colour chocolate I use. And what this does is when I've got someone who's got quite full eyebrows, I like to kind of like just brush this through, lift the hair up, add a little bit of colour, and then I don't always need to add too much product afterwards. So it just varies obviously time to time, but that's what I'm doing at the moment. सो यहाँ पे मैंने ब्राउ जेल इस्तेमाल किया NYX की, यहाँ पे जो सारे बाल हैं उनको ऑब्वियसली मैंने ब्रश अप कर दिया एंड देन थोड़ी सी ब्राउ जेल यूज़ करके तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ ना। यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा ऑब्वियसली मैंने कर दिए थे एंड देन आईब्रोज जब वो कंसीलर लगाऊंगी तो वो ठीक हो जाएंगे. So I'm just using my Kat Von D gel here. It's the one I've got at the moment, so it's the one I'm using. So when I move on from this, I'll probably just have another product. So it just depends what I like. At the moment, I'm quite happy with this. So I'm just using this to fill in the eyebrows, and then I'm going to go around it with the P. Louise base just to carve out the shape and make them a little bit thinner. So if you're new to my channel, welcome to my channel as well. So here on this channel, what I'm trying to do is show you how to apply makeup and bridal makeup, how I do it, and just show you different techniques and products that I use, and hopefully it'll just help you out. I am getting a lot of messages from people telling me that, you know, the videos are really helpful. So I'm really, really pleased about that. And, you know, a few people have said they've done their own bridal makeup and things like that. So that always makes me really, really happy as well. So thank you so much for the positive feedback. So here I'm going in with my P. Louise base. You can see I'm using a flat synthetic brush. I do have to do a video on brushes that will be coming soon, hopefully. And I'm just placing this on and I'm just carving around the eyebrows, and then I'm going to do the top section as well and really neaten it up. तो यहाँ पे मैंने P. Louise का बेस यूज़ किया है, फ्लैट सिंथेटिक ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ इसको. ब्रशेस की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी. एवरी टाइम मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रश कौन से यूज़ किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कौन से ब्रशेस इस्तेमाल किए हैं. यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली फ्लैट ब्रश को इस्तेमाल करके तो शेपिंग कर रही हूँ आईब्रोज़ की. तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हुआ है वो सारा मतलब मैं नीट कर रही हूँ यहाँ पे. एंड देन इम्पोर्टेंट है कि जो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको आप एक क्लीन फ्लफ़ी ब्रश से ना तो उसको बफ़ कर दे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे लाइंस पड़ जाएंगी जब आप बेस वगैरह करेंगे. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे ना product that's actually on the eyelids now, and making sure that everything is really nice and smooth and blended out around the edges. If you are enjoying these videos, please do give me a thumbs up and do leave me a comment as well. It does help with the video as well and the reach of the video, so that would be amazing if you guys could leave a nice comment because it motivates me as well to do more for you guys as well, because it's really a lot of work. And obviously your comments keep me going. तो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ एक क्लीन फ्लफी ब्रश से बस किया. एंड यहाँ पे जो पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ ट्यू फेस का है, एंड ये जो पिंकी सा कलर है ये इस्तेमाल कर रही हूँ आउटर एजेस के लिए. अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोडक्ट वेट है, मैंने पाउडर से नहीं सेट किया. आप सेट भी कर सकते हो लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, एंड यही मेरा मतलब पाउडर होता है जो इसको सेट करेगा. तो एक फ्लैट ब्रश से मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलर यूज़ कर रही हूँ, एंड पैटिंग मोशन से सिर्फ कलर कर रही हूँ. अभी यहाँ पे ब्लेंड नहीं कर रही. अगर यहाँ पे एकदम मैं ब्लेंडिंग शुरू कर दूँगी तो फिर जो नीचे जो वेट प्रोडक्ट है वो उसके साथ मतलब मिल जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा obviously. So I've gone in with my Too Faced palette here. I'm using like a flat brush and I'm tapping on the corners, the outer corners, the areas here. So what I'm doing is I'm tapping it on. I'm not swiping, I'm not blending at the moment. And if I started doing that, then obviously the wet product will mix with the powder and it's just going to become a mess. So what you're doing here is just tapping on your color just to get the color payoff. And then I'm going in with this very slightly lighter color now to the very first one, and I'm going to blend out the harsh edges. तो यहाँ पे ब्लेंडिंग अभी करने के लिए एक इससे एक लाइट कलर लिया एंड आउटर कॉर्नर्स को अभी ब्लेंड कर दूंगी.
अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, पसंद आ रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मुझे बताएं, लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आगे और वीडियोस भी आ रही है, इंशाल्लाह कोर्स भी आ रहा है। सॉरी, मैंने बोला था कि कुछ महीने पहले कि मैं कोर्स शुरू करूँगी, मेरा बेटा बीमार हो गया था रमज़ान में, उसका ऑपरेशन भी हुआ है, अभी भी थोड़ा सा है, मतलब हर दूसरा दिन हम हॉस्पिटल जा रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो वो थोड़ी सी डिले हो गया। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस आपकी शुरू कर दूँ एंड जल्दी जल्दी आपके साथ साथ ना जो मेकअप कोर्स है जो फ्री में होगा यहाँ पे, वो आपका मैं शुरू कर दूँ। लेकिन प्लीज़ अगर आप लाइक एंड कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल की भी हेल्प हो जाती है एंड ऑब्वियसली मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। So a lot of people have been asking about the makeup course. I did say that I was going to start a makeup course, and unfortunately things did get delayed. In Ramzan, my son did have to have another operation on his leg, and we're in and out of hospital, to be honest with you, so it has delayed things a little bit, but inshallah I will be starting the course soon. I am trying to work on it now and getting all my videos sorted out for you guys, and I will be explaining everything in detail. As you can tell, I do it in these videos as well, so I'm just going to break things down a little bit and try and make them a little bit easier for you guys as well. I'm just debating now whether to kind of like, I'm going to stick to one language. I think that's what I'm going to do, so I've just got to figure out which one I'm going to do first and what I'm going to do, but inshallah it will be here soon. So I've taken out a darker brown shade now from the same palette, and I'm just deepening the outer socket areas now. So यहाँ पे मैंने अभी एक डार्क ब्राउन लिया है सेम पैलेट से एंड आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन एकदम नहीं लेके आ रही, बस उसको मैं काफ़ी जैसे आउटर वी में रख रही हूँ, लेकिन मैं मतलब हाफ वे आइज़ पे भी आ रही हूँ, मतलब लिड्स पे ना आप देखें कि सिर्फ इस जगह पे नहीं रख रही, मैं काफ़ी ज़्यादा इधर लिड्स पे ले आती हूँ थोड़ा सा। मेरी ब्लेंडिंग ऐसी ही होती है, ऑब्वियसली इस लुक के लिए मैंने ऐसे ही की है। So if you just have a look, I'm not keeping the brown just to the outer corners, to that outer actual V. So I'm actually blending it outwards and bringing it in across the eyelid as well, a little bit at an angle. So I hope that makes sense. You can see what I'm doing. So that's the kind of blend I like to do, and on this particular eye makeup, that's what I was planning on doing as well. So then I'm going in with this shimmery color. It was like a light yellowy gold. And I'm just going to use my finger and tap this on now. And I always do this twice, and I like to use my finger rather than using a flat brush, but you could do if you wanted to. So फिर मैंने ये कलर लिया है, फिंगर से ही मैं लगा रही हूँ, गोल्ड सा ही है, सेम पैलेट से ही मैंने यूज़ किया है, तो इसको मैं लगा रही हूँ 2 दफ़ा। नॉर्मली मैं ये करती हूँ, आप एक फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिंगर यूज़ करना अच्छा लगता है, उससे मुझे लगता है कि प्रोडक्ट सही ज़्यादा लगता है। And you can have a look, and I'm actually dragging it across into the other colours a little bit. So I like to overlap a little bit, and then I go back and I always define the outer socket area again. So to make this pop a little bit more, obviously you could leave this like this as well. I would obviously go back in and sort out the inner corner, the outer corner, sorry. But I'm adding on my NYX glitter glue, and then I'm going in with a pigment. So this pigment is like a shimmer, and it's from Gashi's, and I've used this a few times and I absolutely love his shimmers. I'm not 100% with the rest of the makeup, but the shimmers and the eyeshadows I'm really, really happy with. So what I'm doing is just getting a fluffy brush, a little bit of the pigment, and I'm going to tap this on, and you'll just see that it kind of like just lifts the eye makeup amazingly. It's just so beautiful. So यहाँ पे मैंने पिगमेंट फिर लगाया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप छोड़ सकते थे आई मेकअप जैसे मैंने किया, ऐसे भी छोड़ सकते थे, आई लैशेस लगा लें वगैरह, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको शिमर देना था, तो काशीज़ का शिमर इस्तेमाल किया। काशीज़ का बाकी का मेकअप मैंने यूज़ किया है, एक वीडियो भी लगाई हुई है, शायद 2 लगाई हैं, दोबारा भी लगाऊंगी फुल बेस वगैरह करके काशीज़ का मेकअप यूज़ करके, लेकिन मुझे उनके पिगमेंट्स एंड आई शेडोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे मैंने ग्लिटर ग्लू लगाई है NYX की, एंड देन छोटे से ब्रश पे थोड़ा सा पिगमेंट लेके तो आई पे लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल ये कलर लग रहा है। लाइक आई लव उसकी जो शिमर्स है ना, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। So once I've added my shimmer on or any glitter in this method, then what I do is I always go to the outer socket areas. Now you can see it looks a little bit messy now.
This is the one mistake I see a lot of people do, where they don't go back in and just add in a little bit more depth into the outer socket areas, or they just don't do any blending, and then there's such a separation, you can really see it. So I don't like seeing that, so I always like to blend outer corners again. So outer corners को अभी थोड़ा सा blend कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा और depth दे रही हूँ, and obviously glitter को भी साथ blend किए जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग normally छोड़ देते हैं, फिर वो जो separation होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती. तो blended look आना चाहिए मतलब ना, तो इसलिए मैं ये step करती हूँ. So now I'm just going in with some liquid liner pen, this is from NARS, and I'm just roughly adding in a little bit of an eyeliner here. So यहाँ पे मैं eyeliner ऐड कर रही हूँ, and ये liquid gel eyeliner है इसका NARS का, and roughly बस एक थोड़ा सा eyeliner का बना रही हूँ line, and then बाद में lashes लगा के सही तरह कर दूँगी. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने वीडियो लगाई थी ना, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मैं काफ़ी होशियार हो गई हूँ, एंड यू नो कि मतलब बारीकियाँ नहीं दिखा रही, और मुझे समझ नहीं आती मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ. ये वीडियो फिर थोड़ी सी लंबी कर दी है कि आपको हर स्टेप, मतलब पिछली वीडियो में भी सारा कुछ दिखाया था कि यू नो मैं हर स्टेप आप सबको दिखाती हूँ, हर प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, सारा कुछ दिखा रही हूँ. ऑब्वियसली पूरी जो लेंथ वीडियो की है वो बिल्कुल सारी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. यू नो जहाँ पे मैं मतलब छोड़ देती हूँ, कैमरा ऑन नहीं होता है ना, ऑब्वियसली साथ कुछ प्रोडक्ट ढूंढ रही होती हूँ, ये वो उस टाइप की चीज़ें मतलब निकाल देती हूँ. बाकी का हर चीज़ मेरी वीडियो में होती है, मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ. सो आई होप आप लोग मतलब आपको पता है कि मैं हर चीज़ आपको दिखाती हूँ, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मतलब नहीं तो मैं वीडियोज़ ये शुरू ही नहीं करती. तो यू नो मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको हर चीज़ दिखाऊँ एंड आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ. So I'm just kind of like sorting out the wing a little bit, but I'm not doing it too much, and I'll take my time. Now, this video is a little bit longer. Someone had commented that, you know, I was being a little bit clever about things and not showing, you know, everything like it should be or like I used to. So that's not the case at all. I like to show all my products and every single thing that I'm doing. And obviously this video is slightly longer now than normal because I just wanted to make sure that, you know, I don't want people thinking that, because I am trying my best to show you absolutely everything. The only things that I cut out are where I'm wasting time, where I'm looking for a lipstick, or I've forgotten where I put my brush and things like that. So everything I do is in all my videos. I'm not skipping any bit. Only the length is shortened a little bit, obviously, but I'm trying to even show you all the blending I do and things like that as well, because obviously it's very easy for me to skip through another bit. So I avoid doing things like that. So next, what I'm doing is I'm just adding in some eyeliner. Now my model was struggling. I went in with a brown eyeliner. This one was from Kat Von D, I think it was. And my model was struggling a little bit, so it was easier for her to do it herself. So I just gave her the pencil. So I said, just, you know, like line your eyes for me. So यहाँ पे मैंने बस ब्राउन आईलाइनर इस्तेमाल किया है. मैंने जब खुद किया था तो आईज़ वाटर हो रही थी मॉडल की, तो इसलिए मैंने पूछा अगर खुद करना चाहती हो, तो उसने खुद फिर कर लिया था. फिर मैंने वाइप से सारा कुछ ऑब्वियसली क्लीन कर दिया, एंड देन अभी मैं विटामिन सी लगा रही हूँ. जो आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे आप ब्रांड यूज़ करें. आप प्लीज़ मेरे ना ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ करी हूँ वो आप यूज़ करें. यहाँ पे ज़्यादा ये है कि प्रोडक्ट आप देख लें क्या यूज़ कर रही हूँ, क्यों यूज़ कर रही हूँ. तो विटामिन सी का इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब मसाज कर देती हूँ स्किन में कि एक दो जज़ब भी हो जाए एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रोडक्ट से ड्राई हो जाए. So I'm adding vitamin C cream serum here. I'm using the Ole Henriksen one. You can use whichever brand you want. I don't want you guys going out and spending lots of money on buying everything I use, because I will keep chopping and changing and move on to something else when I run out of this particular product. So just look at the steps and follow what I'm doing. So the serum I've done, I've applied it, I've massaged it in really well, and then I moved on to the eye cream. And then I'm going to make sure I leave a little bit of time between each application of these products I'm using. So पहले मैंने आई क्रीम लगा दी है साथ में, and अब मैं सन क्रीम लगा रही हूँ. So I love using sun cream. I've only started doing this a few months ago now, but I think it makes a really, really big difference to the skin, and it gives us such a nice glow as well. So I really like using this. So because I'd actually applied enough products, I didn't actually bother going in with moisturizer. I went straight in with my primer.
And I'm really, when you're using this kind of primer, so this is the e.l.f. Putty Primer, so this is for like pores and things like that. So what you want to do is you want to rub this in circular motions and really work it into the areas that you need it in. So you don't actually need it all over the whole face. You could do, and what I'm doing is, obviously my model did have slight rough patches and bumpy areas, so I kind of applied it on most of her cheeks. So that's how I'm doing this. So जब आपने ये प्राइमर लगाना है ना, ये पोज वाला मैं लगा रही हूँ, एल्फ का है, तो काफ़ी इसको सर्कुलर मोशन से आपने इसको लगाना है जब तक लाइक अच्छी तरह जज़ब हो जाए स्किन के ऊपर. एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीक्स पे ना अनइवननेस थी एंड थोड़ा सा बम्पी था सारा कुछ, तो उसको काफ़ी देर आपने ब्लेंड करना है ऐसे. तो वो एक तरीका है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था. नेक्स्ट अभी मैं मेकअप फॉरएवर का जो मेरा फाउंडेशन का पैलेट है उसका जैसे डार्क ब्राउन सा मीडियम ब्राउन हैं, दो कलरों को मिक्स करके नॉर्मली मैं कलर करेक्टिंग करती हूँ ना. अगर आप डरते हैं, जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लगाती हूँ एंड मैं आगे जब अपना कोर्स लेके होंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कम प्रोडक्ट से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, मुझे आदत है एंड मैं ऐसे मतलब करके तो इसको मैं कवर कर लेती हूँ. लेकिन कुछ लोग होंगे जो इतना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उनसे कवर शायद ना हो. सो इसलिए आप थोड़ा सा कम नहीं तो प्रोडक्ट यूज़ कर लें, मतलब जैसे मैं कर रही हूँ. अगर आपको वो ज़्यादा लगता है तो आप बेशक कम यूज़ करें. So I'm color correcting with the Makeup Forever foundation palette. Now I've used like a combination of the browns. So this might be a lot of product for you guys, but I managed to cover it up. So obviously if you're doing it on yourself, or if you're new to this, use less product please. Don't spread it across the whole face like I've done it. I am going to show you other ways of applying this as well. So don't overdo the products. I know I'm quite used to doing it like that, and that's why I do it this way. So I've gone in with my Krylon paint stick now, shade GG, and I'm just painting this onto the whole face. So Krylon की पेंट स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ, शेड GG है. आई नो ये सबको अवेलेबल नहीं है, जो आपको शेड सूट करता है वो यूज़ कर लें. ये मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया. इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ. नॉर्मली मैं नहीं करती लेकिन थोड़ा सा मैंने कर दिया था इस दफ़ा. एंड देन इसके ऊपर नाज की फाउंडेशन लगाऊंगी. So I'm just blending this out a little bit. I don't normally even do this. I normally go in straight with my foundation, but I was working out what foundation I actually wanted to use. So I just blended it out a little bit and then I decided to mix it in with the NARS Longwear foundation. So the shade is Punjab. And what I'm going to do is just use a brush. I'm just using my Real Techniques brush and I'm going to just add that foundation as a layer on top. So I love layering on my foundations. Now I've got a video that was on a few days ago which is showing you my top 5 combinations. A lot of them include the Krylon as well, but there are so many other combinations as well that where I use different foundations. So I'm going to do another video soon as well, and I'll give you more combinations or just more foundations that I like using. I mean, the NARS is gorgeous on its own as well. You do not have to combine it with the Krylon, you really don't. But obviously for long lasting makeup I just find it makes a difference, because sometimes I do a second look and when I add just the one foundation I can really see the difference in of the coverage and things like that. So as you can see, I'm just brushing this on now and then I'm going to use my damp beauty blender to blend it out. So यहाँ पे मैंने नाज की फाउंडेशन लगा दी है, ब्रश के साथ लगा रही हूँ इसको. नाउ आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है, मतलब आप एक फाउंडेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे ब्राइडल मेकअप के लिए, मतलब जो कवरेज होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो ऐसे कॉम्बिनेशंस करके ना. मैंने पहले भी एक अभी वीडियो अभी लगाई है कुछ दिन पहले जहाँ पे मैंने अपने टॉप 5 कॉम्बिनेशंस बताए थे. और भी हैं मेरे पास है और वो भी आपके साथ साथ मैं चीज़ें लगाती जा रहा हूँ कि कौन सी मुझे फाउंडेशन पसंद है और किसके लिए, मतलब. लेकिन अभी मैं ब्राइडल की ज़्यादा बात करती हूँ, बाद में मैं पार्टी की भी बात करूँगी, नॉर्मल डे टू डे जो वेयर होता है वो भी करूँगी, सारा कुछ इंशाल्लाह आपके लिए कवर करूँगी. तो अभी आप देख लें कि ब्यूटी ब्लेंडर से मैं टैप कर रही हूँ इसको. डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, सारा पानी आपने निकाल देना है. टिश्यू से मैं थोड़ा सा ड्राई भी कर लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो. एंड देन इसको टैपिंग मोशन से करते करते ना इसको आप ब्लेंड कर दें. So I'm just tapping away and just making sure everything is blended. So I'm not swiping, I'm tapping into the skin.
Now next I'm going to be doing the concealer. So lately what I've been doing is I've been using the Too Faced concealer on the outer edges of the eyes, and then inside I'm using the white base from P. Louise. Now I'm actually going to be getting some, the reason I started using the white base, and I'll be honest with you, is because I didn't have a white concealer and I needed something white to add, and when I did it, it really worked for me. And I know the bases can be used for these kind of things, so it works. So I'm still using the white base at the moment, but I am going to be ordering some actual white concealers as well. So you'll probably see in the next few videos that I'm starting to use the white concealer. So the whole point is it's really light. It's white basically. So I don't want you all to go out and buy the white base, because I will now be probably moving on to a white concealer. So just a really light concealer will do as well. So it doesn't have to be white, but it just really works for me. तो यहाँ पे मैंने आउटर एजेस पे यहाँ पे कंसीलर लगाया है टू फेस का वनीला, एंड देन यहाँ पे अभी मैं वाइट बेस यूज़ कर रही हूँ ना। वाइट बेस पी लुइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ये शुरू किया था कुछ महीने पहले ना। वाइट बेस मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि मुझे वाइट चाहिए था, लेकिन कंसीलर मुझे कोई मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, तो मैंने ये यूज़ कर लिया था। एंड इससे बहुत अच्छी कवरेज भी मिल जाती है और यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी आगे से मैं एक दो अभी मैंने वाइट कंसीलर्स ऑर्डर करने हैं, वो यूज़ करूँगी आगे इंशाल्लाह। एक दो वीडियोज़ में शायद वो आ जाएंगे तो मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैं नहीं चाहती कि ऑब्वियसली आप जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ आपको लगे कि सिर्फ वही इस्तेमाल हो सकता है। बस अभी ये भी मैंने मतलब कंप्रोमाइज़ किया था उस दिन जब पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। तो वो जो मतलब अभी से हर वीडियो में मैं रिसेंटली कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये तरीका से, इसलिए अभी मैंने सोचा कि एक वाइट कंसीलर भी ऑर्डर करती हूँ, देखती हूँ क्या फ़र्क है, कौन सा मतलब मुझे बेस पसंद आ रहा है या मुझे कंसीलर पसंद आ रहा है। तो वो मैं आगे आपको साथ बताती रहूँगी। मैं भी यूज़ करती रहती हूँ चीज़ें, उसी के पहली दफ़ा या एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, तो आपके साथ ही मैं भी लर्न कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, सॉफ्ट कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर का पैलेट यूज़ करके। So I'm doing the contouring here. I'm not drawing on the lines. The lines, like I said last time as well, sometimes it's done just to be, dramatize everything, and sometimes it is for placement and things like that. So, I think a soft contour is actually nicer. So I like to use the foundation. So again, this is giving me extra coverage, extra long lasting and everything. It will make the makeup later on once I've set it. So I've placed it on, and I'm just with my Real Techniques brushes just blending it in, and then obviously I'll blend it out more when I add in my powders and when I go over it as well afterwards. So now that I've done that, I want to start blending out my under eye concealer, and before I do that I like to spray it with some setting powder. So I'm going to be using my Benefit Professional spray here. So यहाँ पे पहले मैंने अभी अपनी ब्लेंडिंग शुरू कर दी नहीं है अंडर आई कंसीलर की, तो पहले मैं इसको नॉर्मली मैक फिक्स प्लस के साथ स्प्रे करती हूँ, या ये जो बेनिफिट का प्रोफेशनल सेटिंग स्प्रे उसके साथ करती हूँ, एंड देन ब्रश की मदद से ही मैं इसको अभी ब्लेंड कर दूँगी। सो सेंटर ऑफ द फेस से शुरू करती हूँ। आइज़ को जब मैं करती हूँ मतलब मैंने मिक्स करना है, इन दोनों कलर्स को ब्लेंड कर देना है, तो वो मैं ब्लेंडिंग कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं नोज़ कंटूरिंग भूल की थी, तो थोड़ी सी ये जल्दी से कर दी थी। I forgot to do the nose contouring here, so I just added it in quickly, and then I go back to the under eyes. So I start tapping out, and I'm kind of like tapping out at the outer edges first, and then working my way inward, and then I'm bringing out the lighter concealer. So the light concealer, I want it more just in the inner corners of the eyes, and that's all I really want is a slight pop there. So I'm tapping away with the Real Techniques brush, and again, I will do a brushes video. I promise you I will do that soon. It's just so difficult getting around to getting these videos done sometimes. So I'm just tapping away until I think it's blended. So blending मैं outer corner से ज़्यादा शुरू कर रही हूँ पहले, and then जो white है ना वो मेरा दिल है कि बस inner corners पे ना मुझे थोड़ी सी brightness मिले, and then साथ साथ इसको blend करके ना ऊपर की तरफ eyes की तरफ लेके जा रही हूँ, इसकी अच्छी blending कर रही हूँ। आप यहाँ पे beauty blender भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई दफ़ा मैं beauty blender भी उठा लेती हूँ, ज़्यादातर मैं इस brush से करती हूँ। And as I'm doing that, I just blend out any harsh edges from the contouring as well.
I forgot to mention that when I did the lashes, there was a problem with the lashes. Like one of the lashes is looking a little bit different, and it will look like that throughout the whole video. But I fixed that right at the end because these kind of things they take time, so I couldn't fix it then. So I just waited right till the end of the video and fixed it. So now what I'm doing is I'm just tapping away the concealer, making sure there's no creases, and then I'm going in with a very small amount of Huda Beauty powder, and I'm just tapping away and just setting everything. So I do this before I do my baking, so I don't go straight away in with lots of powder. I'm just going in just a very small amount with my damp beauty blender. तो यहाँ पे पहले अभी सारा फेस को मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर को ही यूज़ कर रही हूँ एंड थोड़ी सी पाउडर से ना उसको सेट कर रही हूँ. फिर मैं अपनी बेकिंग करूँगी, क्योंकि बेकिंग अगर एकदम करोगे तो बहुत ज़्यादा वो फिर वेट पाउडर पे ना ज़्यादा लग जाता है पाउडर. तो थोड़ा सा पाउडर इस्तेमाल करें, ज़्यादा भी नहीं है. थोड़ी सी आप पाउडर पफ यूज़ कर लें, ब्रश यूज़ कर लें. मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर कर रही हूँ एंड थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ. एंड देन अपना पाउडर पफ लेके तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पाउडर अभी डाल दूँगी, वही सेम पाउडर है ब्यूटी का, एंड वहाँ पे मैं अपनी बेकिंग कर लूँगी. ये आप देख लें. So I'm just using a powder puff. Now, people have asked me about this powder puff. I need to find out for you where I got this from, because I actually got this off from my friend who had ordered it from somewhere, just because I was just going to try it out, and then I've never asked it again. But I do like it, and I don't think it was that expensive, so I will try and find out for you where she got it from. So you can see this is where now I'm doing my baking, and this is where I'm going to contour a little bit more by adding on more powder, and then I'm going to contour, and then when I blend it all out, it just gives you a slight blended harshness, I would like to say. I mean, you can go harsh if you want to, but I don't particularly like to. So then I'm using my MAC Studio Fix powder in NC40, and I'm just giving in a little bit more colour and just contouring away. तो यहाँ पे मैं मैक का फिक्स स्टूडियो फिक्स पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर दी है. फिर जो पहला कलर इस्तेमाल किया था ना आइज़ के नीचे, पाउडर को हटाने से पहले अंडर आइज़ को मैं डिफ़ाइन कर दूँगी थोड़ा सा. तो पहले जो पहला कलर यूज़ किया था एंड देन थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करके ना तो उसकी डेफिनेशन ले आती हूँ. So I'm just using the very first colour I used on the lids, and then I'm just sweeping this underneath the eyes and outwards a little bit, and then I blend that out afterwards, and then I go in with a slightly darker brown as well, just closer to the lash line, just to define the eyes a little bit more. So you can see I've just got another brush, and I'm just using the dark colour now. So what I'm going to do now is actually brush away all this extra powder now. So what I'm using here is I tend to use a lot of MAC Studio Fix, or I will use the Charlotte Tilbury Flawless Powder, which I'm loving these days, and this is in the shade Fair. And I'm using my Real Techniques brush, and what I'm doing is not swiping, I am actually pressing the powder into the skin, and then the excess I'm actually buffing away. तो यहाँ पे मैंने चार्लोट टिल्बरी का फ्लॉलेस पाउडर इस्तेमाल किया. आप कोई भी जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैक का भी मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं इसको स्वीपिंग मोशन से नहीं, इसको प्रेस करके पाउडर जो वहाँ पे है ना स्किन के अंदर प्रेस कर रही हूँ, एंड देन जो बाकी का है उसको मैं बफ़ कर देती हूँ. लेकिन इनिशली जो पाउडर होता है ना उसको मैं प्रेस करके लगा रही हूँ. और इससे आपकी ना जो लुक आती है ना, एक तो डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, एंड इसकी जो ब्लेंडिंग हो जाती है, एंड फ्लॉलेस बहुत लगता है माशाल्लाह. सो इतने पाउडरिंग करने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं नॉर्मली स्प्रे कर देती हूँ. मैक का फिक्स प्लस करती हूँ, यहाँ ये बेनिफिट का वो फ्रेशन अप. So after all that powdering, obviously you have to give some life back to the skin. So I normally go in with my MAC Fix Plus or the Benefit Professional, which is what I've used in this video.
So the next step is to go in with some highlighter and some blusher. So what I'm doing is I'm using a mixture of Dior blusher, which is that pinky one, I can't remember the shade I'm afraid, and the Hourglass palette. So I was using like this brush at the moment, and this is quite it's not a very dense brush, so I was putting it on because I didn't want it to be too much. It was the first time I was using it. It's not actually my blusher. My friend I was doing the shoot with, it was her, so I thought I'd try it out. But it was a beautiful pink actually. But then I did go in with a slightly denser brush just to get more color payoff. So यहाँ पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ. ये आवर का पैलेट था, एंड साथ डियोर का एक लाइट पिंक का ब्लशर था जो मुझे कलर नहीं याद, मेरा अपना नहीं था, किसी और का मैं इस्तेमाल कर रही थी. तो पहले मैंने जो ब्रश यूज़ किया था वो इतना डेंस नहीं था, तो फिर वो जो पे ऑफ होता है ना कलर का, वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था. फिर मैंने ये ब्रश चेंज किया, थोड़ा सा ये थिक ब्रश है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा फिर कलर आ गया था. लेकिन ये जो पिंक है ना ये बहुत प्रिटी था. ये डियोर का था, इसके दो कलर्स आई थिंक है, एक ऑरेंज सी वन एंड एक पिंक वाला, तो बहुत ज़्यादा नाइस था. सो आई थिंक ये मैं सून ले रही होंगी. I did love that blusher actually. I didn't want to fall for, like the TikTok and, when all these things are going viral and things like that. But I did really think that blusher was really pretty. And then I went in with some highlighter. This is Doll Beauty Highlighter Shine Bright. So highlighter भी इस्तेमाल किया Doll Beauty का, and इसको blend कर देती हूँ. Normally मैं highlighter पहले करती हूँ, then blusher की blending सही हो जाती है. लेकिन कई दफ़ा मैं blusher पहले कर देती हूँ, फिर highlighter, लेकिन फिर दोबारा मैं फिर blusher करती हूँ. नहीं तो अगर आप अभी देखें ना, जब ये side change करती है तो highlighter ना बैठा हुआ नज़र आ रहा है, सही नहीं लग रहा, मतलब उसको blending की ज़रूरत है. So I always normally go in with my highlighter first and my blusher, just so that it can actually blend everything out, because otherwise it looks like your highlighter is just sat on top of your blusher, which it was doing. If you've seen it, it just didn't right. And then I always go back in and with my blusher and blend that out. Lipstick, for some reason, I don't know why I haven't got it in the video, but it cut out. But it was a mixture of two lipsticks that I've got on the screen. It was NYX and Too Faced, so I just mixed those up to actually create this shade. The pink was really like a hot pink, so I added in more of the other colour, which is more of a nudie colour, to get this shade. And then obviously I'm just going through the eyelashes and putting on mascara. Any mascara, I normally get my model to bring their own because I don't like using wands, so I just ask them to bring their own mascara so I can use it. So लिपस्टिक मैंने दो शेड्स इस्तेमाल किए थे. NYX का लाइक हॉट पिंक के साथ था, एक न्यूड लिपस्टिक थी. उन दोनों को मिक्स करके मैंने ये शेड बनाया था. आई एम सॉरी वीडियो में ऑब्वियसली वो नहीं आया, लेकिन लिपस्टिक वो मैंने मिक्स किए थे. मैं मस्कारा लगा दिया. मस्कारा जो भी हो, मैं मॉडल को ही बोलती हूँ अपना ले आए साथ, क्योंकि मैं मस्कारा वॉन्ड्स नहीं यूज़ करती, अनहाइजीन की वजह से ऑब्वियसली मैं अपना मस्कारा नहीं यूज़ करती. सो इनका अपना जो भी होता है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ. इनर कॉर्नर पे थोड़ी सी हाईलाइट कर दी है, वही सेम डॉल ब्यूटी का. So I'm just highlighting the inner corners here. And then as usual, I'm topping up the eyeliner now and making sure, I decide at the end whether I want a really big wing or if I want it thick or anything like that. At the end is when I decide. I'm not one of those who I can just go in with a really thick eyeliner and things like that. I normally decide afterwards. So यहाँ पे अपना आईलाइनर को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, लैशेस को भी साथ क्लीन कर रही होती हूँ. डिसाइड कर रही होती हूँ कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग करना है या थिक करना है या नहीं. मैं एकदम लाइनर कभी भी ज़्यादा नहीं लगाती, मैं हमेशा एंड पे ही करती हूँ. And this was pretty much the full look. So I mean, I'm getting rid of the extra powder there. So this was the full look. I have got a hair tutorial as well, that will be up soon as well. I hope you've enjoyed this tutorial and you've benefited from it. If you have, please do give me a thumbs up, drop me a comment, subscribe, share the video as much as you can, and I'll be seeing you guys soon. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप सीखने के लिए भी कुछ मिला है, और आपको पसंद आया है. ट्यूटोरियल भी होगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में. एंड आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला ये इस वीडियो में. एंड अगर मिला तो फिर ऑब्वियसली कोई कमेंट करके मुझे बता देना, लाइक करें, शेयर करें, एंड इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफ़िज़.